Good afternoon, students. Welcome to your today's chapter briefing session for chapter number 6. The name of the chapter is Tux Paint. In this video, I'm going to revise you the content which we have learned in today's session. We had started with regarding the Tux Paint. In 3 points, we have defined regarding the Tux Paint. That is, Tux Paint is a computer program. Basically, what is a computer program? Computer program tells your computer how to do a work. किसी भी वर्क को, किसी भी एक्शन को करना कैसे करना है, it is told to computer by a computer program. So Tux Paint is a computer program which tells the computer how to do the work. What kind of work or task? It is used to draw or color the drawings. Tux Paint is used to draw or color the drawing. And it is a free program which is available on Google or internet. Being developed by Mr. Bill Kendrick. He is the developer. He is the one who has made this program Tux Paint. To open the program or to start the program, on the search bar or on the dash icon where we have a search bar, we have to write the name of the program Tux Paint. Once you will write the name of the program, it will show you the program icon with a penguin holding a paintbrush in his hand. That icon is the program icon of Tux Paint. You can double click on that program, you can double click on that icon, and the Tux Paint program will open in front of you. Once the Tux Paint program is opened, the screen will be something like this. On the left hand side, you have toolbox. On the right hand side, we have selectors, or you can say the brushes. On the bottom part, we have color, and in the mid, it's drawing area. Basically, what is tool? Tool is something which we use to do our work, to make our work easy. For example, right now I'm using a marker to write on the board. So a marker is a tool for me. Similarly, you have seen scissor from which we cut the paper, knife with which we cut the vegetables. These all are tools for us. Okay, we use these things to do our work. So in your Tux Paint also, we have certain tool which help to draw color. ये tools आपको different shapes, different colors करने में help करते हैं. Whatever tool you are selecting, regarding its different options will be shown on selector. Like if we are taking an example of shape tool, अगर हम shape tool select करते हैं, बेटा on the selector part we will have different shapes जिनमें से हमें select करना है, and whatever shape we can select, it will be drawn in the drawing area. Colors are used for coloring purpose, for drawing itself. So the color section helps to change the color of the drawing, or you can say the color of the outline. This is a basic introduction of the window screen or the Tux Paint window. When you will open up Tux Paint window, some screen something like this will be shown, where left side we have tools, right side we have selectors, bottom part the color area, and the middle part, that is your drawing area. In this, we are going to learn how we can insert a new drawing. Yes, there are lots of drawing which are saved in the computer program. Tux Paint program में बहुत से drawings saved, already pre-saved हैं. आपको draw करने का जरूरत नहीं होगा. It is already pre-saved, which you have to select, and then you can color them out. For that, what you have to select? You have to select first the new tool from the tool section. When you will click on the new tool, a colored background, or you can say the starter drawing. जो drawing आप select करने वाले हैं, इन्हें हम starter drawings कहते हैं. So when you will click on new tool, a window will open up showing you so many starter drawings. एक विंडो ओपन होगा जो आपको बहुत सारे स्टार्टर ड्राइंग्स शो करेगा.
Once the picture is selected, any picture which you want to be have on the screen, आप एक drawing select करें and click on open button. The selected drawing will come on your drawing area. Click on new tool, click on any of the starter drawing which you like, click on open button, and the drawing will be shown on the drawing area. To color the drawing, आपने drawing download कर लिया. After that you have to color them. So for coloring the drawing, you have to click on the magic tool which is on the left side. After clicking on the magic tool, you have to click on the fill option. Magic tool में आप select करेंगे on the selector part, that is on the right side. Brushes वाले selectors part में you will see a fill option. Click on that fill option, select the required color whichever you want, and आप उस drawing में fill करने के लिए click करें. The selected color will be filled in that drawing. जो भी color आप select करेंगे वो आपके drawing के अंदर fill हो जाएगा. This is your coloring a drawing. Now you have inserted a drawing now. आपने अभी तक एक drawing insert कर लिया होगा, and you have colored them also. Now you would like to see how you want that वो drawing मम्मी पापा या your teacher me आप मुझे दिखाना चाहेंगे. So what you will require, you have to save that drawing in the computer. आपको कंप्यूटर के अंदर drawing को save करना होगा. Okay, for saving the drawing को save करने के लिए we will use the another tool, and which is that tool? We will use the save tool. आपने जो drawing color कर लिया है, we have to save them, and for saving we have to click on the save tool. Once you will click on the save tool, the particular drawing जो आपने drawing color किया है वो computer memory में computer में store हो जाएगा, which you can access later, जिसे आप बाद में open कर सकते हैं. You can color them out, you can do all the work. That drawing will be saved in the computer's memory. Now once you have saved a drawing, आपने drawing save कर लिया. Okay, now you want to see that drawing again. To see a saved drawing, जो drawing आपने save किया है computer memory में, उसे देखने के लिए, to open that drawing, we will again use the open tool. Click on the open tool. Open tool will show you all the drawings which you have saved. सारे drawings जो आपने save किए हैं वो आपको open tools में show होगा. Whatever drawing you want to open again, जो भी drawing आप वापस open करना चाहते हैं, click on that drawing and click on open button. The selected drawing, जो drawing आपने select किया है, वो drawing आपके drawing area में again open हो जाएगा. I would like to say, if you want to open a drawing, you can open it with the help of open tool. You can open it with the help of open tool, and once you have selected the drawing, you can click on that drawing and click on open button. The selected drawing will open in the drawing area. जो drawing आपने save किया है वो आपके selected drawing area में open हो जाएगा. After that we are going to talk about tools like paint tool, eraser tool and stamp tool. हम 3 tools के बारे में अब बात करेंगे. One is your paint tool, second is your eraser tool, and the third is your eraser tool, and the third is your stamp tool. So let's talk about paint tool. All tools which we have talked about right now, paint tool, eraser tool or your stamp tool, they are available on the tool box, that is the left side. Left side में जो tool box है, in that you will find paint tool. Paint tool is used to draw freehand drawing.
Like you can see right now, sir is drawing a freehand drawing. A freehand drawing, and for this we can select the different brushes and different colors also. Okay, so paint tool is used to draw freehand drawing. Once you have selected the paint tool, आप पेंट टूल सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द टूल बॉक्स. इन द सेलेक्टर सेक्शन, ब्रशेस सेक्शन, आप देख सकते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ brushes, or you can say different types of drawings have been drawn. Star, small star, big star, heart shape, some linear shape. So whatever brush you are selecting, let's say I have taken a star. So what will happen? जहां जहां पे मैं ब्रश से क्लिक करूंगा या ड्रॉ करूंगा, वहां पे मेरा सेलेक्टेड ब्रश टाइप, अभी मैंने स्टार लिया है तो सेलेक्टेड स्टार वहां पे पेंट ब्रश के थ्रू ड्रॉ होना शुरू हो जाएंगे. पेंट ब्रश अलाउज यू टू हैव अ फ्री हैंड ड्राइंग, जिसमें कोई ड्राइंग नहीं होगा, आपको इटसेल्फ ड्रॉ करना होगा. लाइक आप पेंसिल से जैसे ड्रॉ करते हैं, पेंसिल से आप ड्रॉ करते हैं तो लाइंस ड्रॉ होता है. हियर आप लाइंस की जगह स्टार या डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. सो एज यू विल ड्रॉ विद यूजिंग ऑफ माउस, द सेम डिजाइन विल बी ड्रॉन ऑन द ड्राइंग एरिया. दिस अलाउज यू टू हैव अ फ्री हैंड ड्रॉइंग. After the paint tool, we have the next, that is eraser tool. And everybody know what is eraser. Eraser is used to rub something. Similarly, when you have drawn something, might be उसका कुछ गलत हो गया हो या सही ड्रॉ नहीं हुआ है, कलर गलत फिल हो गया है, आप उसे इरेज कर सकते हैं. You can erase them by using the erase tool. So you will click on erase tool, left click the mouse button, and after left clicking, जब आप erase tool select करते हैं, the cursor will become like a box. This is eraser beta. This box which you will see on the screen is eraser. You have to click on the left button of the mouse. Then only the eraser will work. आप left button को press रखें and wherever you will move this eraser, ड्राइंग में जहां जहां ये इरेजर लेफ्ट बटन प्रेस करके आप मूव करोगे, वो पार्ट इरेज हो जाएगा, वो पार्ट रब आउट हो जाएगा. सो किसी भी ड्राइंग को इरेज करने के लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू सेलेक्ट द इरेजर टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स. वंस यू हैव सेलेक्टेड द इरेजर टूल, इट विल शो समथिंग लाइक दिस. नाउ क्लिक ऑन योर लेफ्ट बटन ऑफ द माउस एंड होवर ओवर द ड्राइंग. जो पार्ट आपको रब करना है उसके ऊपर इरेजर को मूव कराएं विद लेफ्ट बटन प्रेस्ड. व्हाट विल हैपन? दैट पार्ट ऑफ द ड्राइंग विल गेट इरेज्ड. एंड कम्स द लास्ट पार्ट, लास्ट टूल, दैट इज योर स्टैम्प टूल. नाउ व्हाट इज स्टैम्प टूल? आई होप दैट यू हैव सीन अ स्मॉल पिक्चर्स और यू कैन से स्टिकर्स. आपने देखा होगा, आपके पास में वो पंचिंग फ्रंट आता है, ओके, जिसे आप इंक पे प्रेस करके जहां जहां पे आप प्रेस करोगे सेम डिजाइन वहां पे प्रेस हो जाता है. मैनी ऑफ यू हैव सीन व्हाइल पुटिंग अप द मेहंदीज आल्सो. वी हैव ऑलरेडी ब्लॉक्स मेड अप ऑफ इट. आप ब्लॉक्स को कलर में डिप करते हैं एंड वेरेवर यू विल प्रिंट दैट ब्लॉक, वेरेवर यू विल प्रेस दैट ब्लॉक, क्या होगा? वो डिजाइन पेपर पे प्रिंट हो जाता है. सिमिलरली देयर आर स्टैम्प टूल्स. Touch paint have small pictures which are known as stamp. You can use the stamp tool from the toolbox. Once you have selected the stamp tool, again आप stamp tool को select करने के बाद on the right side, that is your selectors part. That selector part will show you different stamp. छोटे छोटे बहुत से pictures show करेगा, different varieties of the stamp. स्टैम्प टूल के डिफरेंट ऑप्शंस को शो करेगा ऑन द राइट साइड. व्हाटएवर स्टैम्प यू लाइक इन आवर बुक, दे हैव यूज्ड द स्टैम्प ऑफ बटरफ्लाई ऑन पेज नंबर 57. दे हैव यूज्ड 2 स्टैम्प्स ऑफ लॉयन. सो दे आर स्मॉल पिक्चर्स, स्टैम्प जिसे हम कहते हैं. ओके, सो वंस यू हैव सेलेक्टेड द स्टैम्प टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स, select the required stamp or type of stamp from the selectors menu, and now
wherever you will click on the drawing area पे स्टैम्प टूल सेलेक्ट करके स्टैम्प सेलेक्ट करने के बाद आप ड्राइंग टूल में जहां ड्राइंग एरिया में जहां भी क्लिक करेंगे वो स्टैम्प वहां पे प्रिंट हो जाएगा या वो स्टैम्प वो छोटा पिक्चर वहां पे पेस्ट हो जाएगा। आप जितनी बार प्रेस करोगे उतने स्टैम्प या उतने स्मॉल पिक्चर्स वहां पे शो होंगे। दैट्स योर स्टैम्प टूल। आफ्टर दैट we have how to close the touch screen. Beta, to use a program properly, we should also learn how to close it properly so that whatever work you have done wo aapse lost now. For closing the touch screen program, we will click on Quit tool. It is also available in your toolbox. Quit tool. When you will click on Quit tool, if your work is not saved, it will ask whether you want to save the drawing. Click on yes. Click on yes button if you want to close the touch screen. When you will click on yes button, the program will properly close. The program proper तरीके से close हो जाएगा. Okay? For closing the program, आपको quit tool पे click करना है. You have to select yes to close the program and it will be properly closed. Students, this makes your chapter briefing session for chapter number 6 complete. I would again share the book reading session along with the practical part, and then I will share the exercise part. Thank you for today. Take care.